Hello, friends. Good evening. This is the time of the week where I talk to you all. It's Friday evening and we are live again. The topic this time was even more incisive than we have had in last few weeks. So the topic here is stent versus bypass. How do we do it? As you know, I am Dr. Mahesh Wadhwani. And if you want to know what factors decide whether we advise for a bypass surgery or whether we advise for a stenting or we advise just for the medicine, watch on for next 10 minutes. Okay, so here with me. So this side, we have cardiac surgeons, cardiologists, interventional cardiologist, pediatric cardiologist, a cardiac anesthetist, cardiac intensivist, all put together, putting their brains behind what treatment is ideal for you. And when we decide the treatment, it's not on the basis of who is dominant, who is not dominant. It's a perfectly unbiased way. Excuse me. हाँ मधु जी. Hello. स्लाइड की जरूरत नहीं है. I am so sorry. This is something my broadcasters, telecasters, and my coordinators are trying to guide me on this. So when we do all this, usually it's done on the basis of guidelines. So what guidelines do we follow? I thought I'll just give you a flavor of that. So first of all, what is a cardiac surgeon? A person who has done his MBBS, then MS general surgery, then 3 years of MCH cardiothoracic surgery, and after that, at least 10 to 15 years of independent work in order to become a senior consultant cardiac surgeon. Same way, a cardiologist, interventional cardiologist, somebody who has done his MBBS for 5.5 years, then 3 years of MD, 3 more years of DM, and after that, 8 to 10 years of, or maybe up to 15 years of work in order to reach a seniority level as to be an independent consultant cardiac surgeon. So what we do is these senior people sit together and talk, but still it's not a random decision. The decisions are basically based on the guidelines. These guidelines are so extensive that the main guideline that we all follow currently is European Cardiological Society, because it came in January 2019. And before that, American Cardiological Association, AHA guidelines, which were there in 2014 and then revised 2018. So such guidelines are in the form of 150, 160 page document where each and every clinical condition, कि आपको अभी दर्द इस समय पे हो रहा है, कि आपको दर्द पास में हुआ था, आपको दर्द रोज रोज होता है कि कभी कभी होता है, आपका दर्द इतना सिवियर है कि आप उठ के बेड तक जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं, कि आपको दर्द 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद ही आता है. So all these conditions are described in the guideline, and on the basis of evidence, it is suggested कि क्या is the best algorithm for you. Now, best algorithm को ध्यान में रखते हुए पहली चीज होती है कि patient factors, कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, पेशेंट की एज कैसी है, पेशेंट का हार्ट का फंक्शन कैसा है, पेशेंट को डायबिटीज है या कोई और सिवियर कोमॉर्बिड सिचुएशंस है. सेकेंडली होता है डॉक्टर्स कंडीशन. व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑन this side, whether the doctor and the facility is equipped with this equipment or not, and then if equipped with these things, who is going to operate, by what time it is going to operate. Third thing is, after these two factors, is patient doctor tak kab pahuncha. So in an acute situation, even a delay of 2 hours change the decision. So अगर आपको चेस्ट पेन हुआ, आप 2 घंटे के अंदर पहुंचे, उसकी एल्गोरिदम अलग है. 2 घंटे के बाद पहुंचे, उसकी एल्गोरिदम अलग है. आप ऐसे हॉस्पिटल पहुंचे तो एल्गोरिदम अलग है, और वैसे हॉस्पिटल पहुंचे तो एल्गोरिदम अलग है. So all these algorithms are like a maze. It's a big complex maze, and इस complex maze में acute condition में तो of course nobody can really help you, because the time lag is too strong in that, and that really cannot help you. But when a patient is a stable coronary artery disease patient, ऐसे patient को guide करने के लिए when there is no acute loss of muscle, कि आपका इस समय पे heart attack आके muscle loss नहीं हो रही है, तो ऐसे में there is enough significant kind of influence that a person can do by guiding along with these guidelines. अब इंडिया में most of the population live in tier 2, tier 3 cities, and tier 2, tier 3 cities unfortunately ऐसे विरले हॉस्पिटल्स ही होते हैं जिसमें कि दोनों फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं. So इमरजेंसी में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिफोर गेटिंग एनी फर्दर फ्रॉम हियर, मैं एक पॉइंट हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ. 5 पॉइंट्स में से जो पहला पॉइंट है, इमरजेंसी में जो आपके पास मौजूद डॉक्टर है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट
इमरजेंसी में प्लीज डोंट लुक अराउंड हियर एंड देयर एंड रन आफ्टर। जिस समय मसल डैमेज हो रही है, हार्ट अटैक आ रहा है, उस समय जो आपके पास मौजूद डॉक्टर है, अगर एक MBBS डॉक्टर भी हैं आपके पास में उस समय पे और आप सही टाइम पे पहुंच गए, तो चांसेस हैं कि वो आप एक अच्छी थ्रोम्बोलाइसिस देके आपको बचा सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट मैसेज। If, however, you are in an ideal world, like in major cities, like metro cities, like where I am in Gurgaon right now. So in Gurgaon, practically in any direction you go, you got a excellent hospital available, which will provide both the excellent cath lab services as well as the excellent cardiac surgical operation theaters. So in such facilities, the ideal scenario comes in, and then the importance of guideline increases. अब इसमें जो पहला एक स्लाइड है which I would like to show, I'll just share the screen. So Madhu ji, if you can share the screen, it will be useful here. So this is the important guideline. So total ischemic time, अगर patient का by ambulance or by reaching a non-PCI center. I hope you can see this slide. And in this slide, I have shown very clearly. This is based on the guidelines of European Cardiological Society. It published in 2019 January. So if you reach with a STEMI, that is the major heart attack, within 120 minutes to a place where you can reach, within 120 minutes where you can reach and your stenting can be done within few minutes, it is best treatment possible for you. However, if you reach after 120 minutes, जहाँ पर स्टेंटिंग नहीं हो सकती है, तो उस समय पे थ्रोम्बोलाइसिस, जो कहा जाता था ट्रेडिशनली कि दवाई दे के गला दिया, दैट इज स्टिल अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। ओके, सो एक होता है पेशेंट डिले, एक होता है सिस्टम डिले। अगर पेशेंट डिले और सिस्टम डिले मिलाकर 2 घंटे से ज्यादा है, तो केवल आप ब्लड क्लॉट गलाकर भी काम चला सकते हैं। बट अगर 2 घंटे के अंदर अंदर आप पहुंच जाते हैं, तुरंत कैथ लैब में लेकर एंजियोग्राफी करके स्टेंटिंग करना इज सुपीरियर इन सेविंग योर मसल। सो इमरजेंसी के लिए, विच इज नॉट हमारा मेन काम ये नहीं है, cardiacsecondopinion.com इज प्राइमरली फॉर स्टेबल पेशेंट्स एंड नॉट फॉर इमरजेंसी। बट इमरजेंसी में अगर आप 2 घंटे में ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर स्टेंटिंग हो सकती है, दैट इज ऑलवेज बेटर। अगर आप नहीं पहुंच सकते हैं तो गलाना उसको बेटर ट्रीटमेंट है। दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस स्लाइड आई वुड लाइक टू से। देन उसके बाद में, नाउ वेयर यू रीच अ प्लेस, पॉइंट जहां पे नाउ द डिसीजन हैज टू बी मेड कि क्या करना चाहिए। अब एंजियोग्राफी हो गई, स्टेबल सिनेरियो है, स्टेबल सिनेरियो में देयर इज नथिंग व्हिच इज ट्रबलिंग यू राइट नाउ। सो व्हाट फेवर्स स्टेंटिंग एंड व्हाट फेवर्स बाईपास? They are the important considerations for anybody who wants to get the treatment done. Again, it is from the same guidelines. तो इस स्लाइड पे थोड़ा मैं फोकस भी करूंगा। आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल टू यू। बट व्हाट फेवर्स अ स्टेंटिंग इज टिपिकली कि अगर बाकी कंडीशंस बहुत बुरी हैं, जैसे कि बहुत ही मोटे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति जिसका बीपी एक्सट्रीमली बहुत हाई रहा है, डायबिटीज बहुत ज्यादा है, या बहुत ज्यादा सिवियर सिगरेट पीते रहे हैं, मतलब बेसिकली ऐसे पेशेंट जिनके लिए हार्ट सर्जरी की रिस्क बहुत ज्यादा है, उनके लिए डेफिनेटली इट इज रिकमेंडेड कि आप स्टेंटिंग करवाइए, ज्यादा अच्छा है, स्टेंटिंग इज बेटर। नाउ दिस रिस्क इज measured by something what we call as Euroscore. So that only a doctor can do in a situation. So typically when a person reaches a hospital, or at least takes a guide from us in cardiacsecondopinion.com, we calculate the person's Euroscore or American Heart Association score, AHA score. So in those scores के through हम बता पाते हैं कि पर्सन को रिस्क कितनी है, इंडिविजुअली उस पर्सन के लिए बाईपास सर्जरी सेफ है भी या नहीं। अगर बाईपास सर्जरी सेफ है तो जनरली मोटे मोटे अधिकतर जगहों पे वो फेवरेबल रहती है, बट मोटे तौर पे अगर आपकी रिस्क ही ज्यादा है तो बाईपास सर्जरी इज आउट ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर आपकी लाइफ बहुत ऑलरेडी एडवांस्ड है, सो टिपिकली अबव 70 इयर्स इन इंडियन पेशेंट्स, या ऐसे पेशेंट्स जिनको कैंसर है या कोई और डिजीज है जिसके चलते वो एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि 5 साल से ज्यादा जिएंगे, डेफिनेटली स्टेंटिंग इज फार सुपीरियर ट्रीटमेंट। थर्ड, ऐसे लोग जिनमें कि ऑपरेशन के बाद में रिहैब कर ही नहीं पाएंगे, कोई अपंग है जिसके पैर ही नहीं है, जो केवल हाथ से ही चलते हैं, जो हाथों के सहारे ही काम कर पाते हैं, या ऐसे जिनमें कि वेन्स ही नहीं है या आर्टरीज ही अच्छे से मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे लोगों में भी स्टेंटिंग इज मच मच बेटर ट्रीटमेंट। ऐसे लोग जिनमें कि
पहले रेडिएशन मिल चुका हो, कैंसर सर्वाइवर्स हैं और रेडिएशन मिल चुका हो, उनके लिए उनकी आर्टरीज और चेस्ट खराब हो चुकी होती है, चेस्ट चिपक जाती है, ऐसे के लिए भी बाईपास सर्जरी इज नॉट अ गुड ट्रीटमेंट। और ऐसे पेशेंट जिनमें कि CABG के बाद में हमें कॉन्ड्यूइस अच्छे नहीं मिलेंगे बिकॉज आयोटा जो कि महाधमनी है हमारी वही खराब है, तो भी स्टिल स्टेंटिंग इज अ बेटर ट्रीटमेंट। व्हाट फेवर्स अ बाईपास सर्जरी इज इफ यू आर अ डायबिटिक। डायबिटीज पेशेंट्स में कई अलग अलग स्टडीज में इट इज वेरी क्लियरली प्रूवन कि अगर डायबिटीज के साथ में आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, हार्ट अटैक आया है, definitely bypass surgery is superior treatment if it can be performed satisfactorily by an experienced person. अगर आपको हार्ट अटैक आके हार्ट का डैमेज हो चुका है और आपका हार्ट फंक्शन 35% से कम है, ऐसी सिचुएशन में भी बाईपास सर्जरी इज अ बेटर ट्रीटमेंट फॉर यू। अगर आपको किसी और कारण से ब्लीडिंग होती रही है, ऐसे सिवियर प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिकरेंट पास्ट में ब्लीडिंग हुई है, ब्लीडिंग के चलते ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है, ब्लीडिंग के चलते कोई समस्या हुई है और आपका ब्लड हम बहुत थिन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे मेडिकल कॉजेज बहुत सारे होते हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी बाईपास सर्जरी इज बेटर बिकॉज बाईपास सर्जरी के बाद में ब्लड थिनिंग की उतनी एग्रेसिव जरूरत नहीं होती है। अगर पहले स्टेंट हो चुके हैं और बार बार स्टेंट ब्लॉक हो रहे हैं, डेफिनेटली बाईपास सर्जरी इज बेटर ट्रीटमेंट फॉर यू। और ऐसे यकीन कीजिए अधिकतर आजकल पेशेंट जो हम ऑपरेट कर रहे हैं ऐसे ही होते हैं जिनमें कई स्टेंट हो चुके हैं और स्टेंट के बाद ब्लॉक हुआ है, ऐसे लोगों का बाईपास सर्जरी हम बहुत कॉमनली कर रहे हैं आजकल। साथ ही साथ अगर ऐसे पेशेंट्स जिसमें कि आर्टरीज टेक्निकली ऐसी हैं जिसमें कि स्टेंट करना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है या मुश्किल है, या फिर रिस्क बहुत ज्यादा है टेक्निकली स्टेंटिंग करने से कि हार्ट में प्रॉब्लम आनी है, तो उसमें बाईपास सर्जरी इज डेफिनेटली बेटर ट्रीटमेंट। अगर बाईपास में अगर साथ ही साथ हार्ट अटैक के कोई वाल्व की तकलीफ है, आयोटा की तकलीफ है या ऐसी कोई चीजें हैं, उसमें बाईपास सर्जरी बेटर ट्रीटमेंट है। सो दीज आर द एल्गोरिथम्स व्हिच वी फॉलो and these algorithms help us decide what is the ideal treatment for you. Final slide which I want to show and share to all is बाकी सब हटा दें, अगर हम सिंपल तरीके से करें कि अगर आपको इतना तो पता ही है कि टोटल हमारी 3 नसें होती हैं दिल में, अगर एक नस की डिजीज है, मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेंटिंग इज अ बेटर ट्रीटमेंट। ओके, दो नसों में भी डिजीज है तो भी इन जनरल, बिकॉज बाईपास सर्जरी अधिकतर लोग पसंद नहीं करते हैं, इन जनरल इफ समबडी इज ऑफरिंग यू स्टेंटिंग इट मे बी अ फेयर डिसीजन, इट्स नॉट अ बैड डिसीजन पर से। बट हाँ, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, से देयर आर 2 पीपल, एक है 40 साल के, एक है 70 साल के। 40 साल के व्यक्ति को अगर 2 वेसल्स की डिजीज है और दोनों टाइट वेसल्स की डिजीज है जिनमें कि मेन प्रॉक्सिमल एलईडी इन्वॉल्व है या लेफ्ट मेन डिजीज इन्वॉल्व है, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का रिजल्ट ज्यादा जरूरी है वर्सेस 70 इयर्स वाले व्यक्ति में जिसमें कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में भी इवन 5 इयर्स इज गुड इनफ। तो 70 साल के व्यक्ति में स्टेंटिंग की तरफ ज्यादा झुकेंगे, 40 साल के व्यक्ति में बाईपास की तरफ ज्यादा झुकेंगे बिकॉज बाईपास पोटेंशियली मे लास्ट लॉन्गर फॉर हिम एंड दैट इन द लॉन्गर टर्म विल बी मच मोर इंक्रीमेंटली बेनिफिट। फैक्ट एक ये है कि बाईपास सर्जरी हर पेशेंट में की जा सकती है, ऐसा पेशेंट कोई नहीं है एक्सेप्टिंग जिनमें बाईपास सर्जरी ज्यादा रिस्की पेशेंट्स हैं, उनके अलावा बाईपास सर्जरी जिनमें रिस्क कम है, ऐसे पेशेंट्स में बाईपास सर्जरी इज टेक्निकली अ सुपीरियर ट्रीटमेंट। सो ये जो ग्रीन कलर है फेवर CABG में दिख रहा है, सो 1A इज द ग्रीन साइड ऑफ इट, वेयर वी हैव टू मेक श्योर that bypass surgery is definitely chosen over a stenting is 2 particular situations where there is this red signal. So red signal is कि अगर आप इसमें stenting करते हो ऐसे पेशेंट में, तो एक्चुअली आप नुकसान कर रहे हैं पेशेंट का, इसमें पेशेंट को जान जाने का खतरा है, ऐसे में पेशेंट को स्टेंटिंग से नुकसान हो रहा है और उसके लाइफ के ईयर्स कम कर रहे हो आप, दैट इज प्रूवन बाय स्टडीज। सो दीज 2 situations are when there is a triple vessel disease और जिसमें कि तीनों नसें की ब्लॉक हैं और साथ ही साथ थोड़ी कॉम्प्लेक्स डिजीज है, या फिर जिसमें लेफ्ट मेन और 2 वेसल इन्वॉल्व हैं और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली बाईपास सर्जरी इज फार सुपीरियर देन द स्टेंटिंग एंड दैट शुड बी टेकन अप। Now these are the basic guidelines, these are the basic things that we use. Now we can remove the slides, Madhuji, and we'll go ahead with the talk only from here on. So in 10-15 minute में जो आपने देखा है, the point is everything is guided. It's like Bible, Quran या फिर गीता है, और इस बाइबल कुरान गीता का हर 4 साल 2 साल 3 साल में एक नया एडिशन आता है और हमें अपडेट करना होता है। So we are the specialists who keep ourselves updated with all this information, including the latest COVID के आने के बाद में जो नई गाइडलाइन साथ में ऐड हुई है, we keep ourselves abreast with all the information
And with that information, what is the ideal treatment for you in an ideal world? That is our endeavor, because we want to provide ideal to our patients. Of course, unfortunately, most of the India does not have such facilities. इसीलिए site बनाई गई है कि आप ऐसी site पे queries भेज के consultations मांग सकते हैं. So here, how we do it is, ऐसा जब patient आता है तो जो information मांगी जाती है आपसे, उस इंफॉर्मेशन में हम सारा स्कोरिंग सिस्टम्स, यूरो स्कोर, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन स्कोर, सारे स्कोरिंग उसी में ही कैलकुलेट कर पाते हैं. पेशेंट से ब्रीफ इंटरव्यू भी होता है, कभी जरूरत पड़ती है तो हम पेशेंट को फोन करके भी बात करते हैं उसके बाद में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन आई है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंजियोग्राफी की सीटी अगर आप भेजें तभी ही हम ज्यादा अच्छे से आपको ओपिनियन दे पाएंगे, बिकॉज उसी के बेसिस पे सिंटेक्स स्कोर कैलकुलेट होता है. कई पेशेंट्स हमें केवल एंजियोग्राफी की रिपोर्ट भेज देते हैं, सीडी नहीं भेजते हैं. सो this talk is also to tell them कि importance of CD is very high, because उसमें ease of doing the stenting versus difficulty is very clearly seen, and syntax score उसमें हम easily calculate कर सकते हैं, जिसके बाद decision making becomes very easy. So this online portal is provided to you for getting such opinions sitting at home. Currently it's free of cost. The online consultations are free. Offline consultation, which is at our clinic in Gurgaon, are of course charged. And now I'll open it to the people. Whoever wants to have questions can ask me the questions, please. Mr. Adarsh Yadav is saying, my father had 2 angioplasties, first one at 46 and second one at 53. The second was dangerous as he had a massive heart attack and was almost dead, but quick injection saved his life. Yes, it happens, Mr. Adarsh Yadav जी. देखिए, कोई भी प्रोसीजर होगा, स्टेंटिंग हो या बाईपास हो, दोनों में रिस्क होती है. ड्यूरिंग द प्रोसीजर इट्स ऑलवेज रिस्की, एंड दैट्स वेयर वी से कि प्रोसीजर करने की जरूरत, अगर आप स्क्रीनिंग करें अच्छे से रेगुलरली, प्राइमरी स्क्रीनिंग, जब पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं थे तभी अगर जांचें कर लें, तो जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, जैसे मेरी पहले की टॉक्स में मैंने बताया हुआ है कि कौन से हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं जिनको बीमारी ज्यादा हो सकती है, तो उनकी एंजियोग्राफी करके स्क्रीनिंग पहले ही कर लें. या फिर ऐसे व्यक्ति जिसके की एंजियोप्लास्टी हो गई है, स्टेंटिंग हो चुकी है, तो उसको साल या 2, जनरल रिकमेंडेशन इज विद इन 6 months you should get a repeat check angio done. Check angiography is very cheap and easy in India. Once you do a check angiography, you know where the disease is heading and जो stent है उसका क्या फ्यूचर होने वाला है. याद ये रखिए कि no procedure is permanent. Stenting हो या bypass हो, उनका अपना अपना टाइम ड्यूरेशन है. Most of the stents may land up in trouble in 5 years, 6 years, sometimes even in 2 years. And bypass surgery also may land up in trouble in 5 years, 10 years, sometimes 20 years. But still, दोनों को longevity के अलावा भी दोनों procedures for a 45-year-old person, जैसे आपके father की एज थी 45 at the time of first procedure, ये तय है कि लाइफ लॉन्ग, मतलब अगर हम उनका एवरेज लाइफ 70 तक माने तो 45 से 70 बिना किसी नए प्रोसीजर के नहीं पहुंचेंगे. जिस व्यक्ति की नेचुरल डिजीज इतनी सिवियर थी कि 45 तक आते आते पहला प्रोसीजर हो गया, उन्होंने विजिलेंस ज्यादा रखना होता है. दूसरा प्रोसीजर इमरजेंसी की बजाय इलेक्टिव होता तो शायद इतनी रिस्क नहीं आती. तो जो रिकमेंडेशन है हर व्यक्ति को, जिसने भी पहले एंजियोप्लास्टी करवाई हुई है या पहले बाईपास करवाया है, रिपीट चेक एंजियो जरूर करवाएं. आज की तारीख में, कोविड के जमाने में, आई वुड नॉट लाइक कि इलेक्टिवली आप जाके करवाएं, तो इसलिए मैंने पिछली बार रिकमेंड किया था कि सीटी एंजियोग्राफी करवा लें. सीटी एंजियोग्राफी में पता चल जाता है मोटे तौर पे कि कैसा फ्लो है, एंड देन इंस्टेड ऑफ गेटिंग द सेम ट्रीटमेंट आफ्टर अ हार्ट अटैक, you can preempt the treatment. You can find out what is the problem, how severe is the problem, and treat it better. And in an elective time, जब emergency नहीं है, we can do much better job. Trust me on that. Like अभी जो मेरे last एक patient थे जिनको कि हमने admit किया था, patient was comfortable, stable angina था. We were planning that उनको 4 bypass करेंगे. बदकिस्मती से उनको जिस दिन सर्जरी करने वाले थे उसी मॉर्निंग में 5 बजे हार्ट अटैक आ गया. इन द सेम हार्ट अटैक पेशेंट, उस पेशेंट को जब हमने ऑपरेशन के लिए लिया, इट बिकेम अ रेस्क्यू बिकॉज स्टेंटिंग के लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी. वी कंसल्टेड अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड इट वाज नॉट पॉसिबल टू स्टेंट इन दैट सिचुएशन. वी हैड टू डू बाईपास एंड वी केम आउट ओनली विद 2 bypass. बिकॉज इन इमरजेंसी यू कैन नॉट डू अ परफेक्ट जॉब. आप 4 bypasses उस पेशेंट को नहीं दे सकते, जान के लिए खतरा बहुत बढ़ जाता. सो वी हैव टू वे द रिस्क ऑन लाइफ वर्सेस द कंप्लीटनेस ऑफ वर्क, एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, भले स्टेंटिंग हो या बाईपास हो, तभी ज्यादा अच्छे होंगे जब कंप्लीटनेस ऑफ रिवस्कुलाराइजेशन होगा, सारी नसें हम खोल पाते हैं. सो अगर कोई एक स्टेंट लगा है आपको और बाकी 1 या 2 नस बची हुई है, दैट इज नॉट अ गुड सिनेरियो, ट्रस्ट मी ऑन दैट. सो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दिया गया है इन सारी गाइडलाइंस में इज ऑन द कंप्लीटनेस ऑफ रिवस्कुलाराइजेशन. मतलब अगर 3 नसों की बीमारी थी, उस समय आपको अटैक आया, आपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने आपको 1 स्टेंट डाल दिया,
यूजुअली कार्डियोलॉजिस्ट विल टेल यू कि आपको 6 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर से एक और स्टेंट डालेंगे या बाईपास करेंगे. सो वो फॉलो अप बहुत जरूरी है. बाकी 2 नसें अगर ब्लॉक पड़ी हैं तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर अगेन. तो जैसे आपके पापा का मुझे हिस्ट्री में लग रहा है मिस्टर यादव, इसकी पहले उनको 45 में एक स्टेंट लगा होगा, बाकी की वेसल्स का स्टेटस आपको शायद पता नहीं हो, या फिर उसी स्टेंट में फिर बाद में ब्लॉक आ गया हो और दूसरी बार अटैक आया. These are not a good ways to go about it. Ms. Shalini Sharma is saying, can you please suggest me? One of the doctors said without doing angiogram, with the help of ECG and echo, he told block is there in the artery and he suddenly told me to do angioplasty. So देखिए एक indirect evidence मिलता है. So if हार्ट की जो दीवार होती है उन 3 दीवारों में anterior wall, lateral wall, inferior wall. So अगर anterior wall involved है तो we can suspect कि main LAD या फिर बड़ा एरिया involved है तो main LAD involved है. अगर lateral wall है तो हम कह सकते हैं कि circumflex या फिर major OM kind of arteries are there. जो inferior wall है उसमें हम कह सकते हैं कि right side of the artery is involved. So ECG की तरफ देख के, echo की तरफ देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ब्लॉक है और उस ब्लॉक से हार्ट में या तो दीवार कम काम कर रही है या डैमेज हो चुका है. बट एट द सेम टाइम सीधे सीधे एंजियोप्लास्टी का डिसीजन इससे नहीं होता है. अगर स्टेबल पेशेंट है, हार्ट अटैक अभी नहीं आया है, सो आइडियली एंजियोग्राफी हैज टू बी डन फर्स्ट. आफ्टर द एंजियोग्राफी द डिसीजन हैज टू बी मेड इन अ हार्ट टीम, व्हिच इज अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई भी हॉस्पिटल्स बहुत अच्छी से हार्ट टीम्स नहीं चला रहे हैं अभी. वेयर पेशेंट का बेनिफिट बेस्ट कहाँ है, that patient gets to discuss with a cardiologist and a cardiac surgeon together, and then a patient is counseled and then finally the decision is taken. Unfortunately इंडिया में आप जहाँ गए वैसा इलाज हो जाता है. आप सर्जन के यहाँ एडमिट हुए हैं तो वो ऑपरेट कर देता है. अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट पहुंचे तो स्टेंट कर देता है. अगर आप एक नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए हैं तो आपको दवाइयों पे चलाता रहता है. दैट इज व्हाई वी हैव मेड दिस साइट, जिसमें कि हम तीनों को एक जगह बिठा के बात करते हैं, which is I think is the right way to do things. So Ritika Sharma ji कह रही हैं, sir, my father has bypass surgery done 2 years back. He is having severe chest pain and high blood pressure. Is something serious? Please suggest something. So Ritika ji, if after the bypass surgery also he continues to have severe chest pain, please get a repeat angiography done as early as possible. COVID के चलते because of this I am not saying कि बहुत तुरंत में जाना चाहिए, but at least you should see a cardiologist and you should repeat angiography. जैसा मैंने पहले भी कहा, कोई भी प्रोसीजर परमानेंट नहीं. और बाईपास सर्जरी एज वेल एज स्टेंटिंग बोथ डिपेंड अ लॉट ऑन किस पर्सन ने किया है, कैसी सर्कमस्टेंसेस में किया है. ऐसे लोग होते हैं जो कि पेशेंट को जरा सा थोड़ा सा स्टेंट ऐसे ही थोड़ा सा खोल के जरा सा लगा के वापस आ जाते हैं और पूरी तरीके से प्री डायलेट नहीं करते हैं या स्टेंट की पोजिशनिंग सही नहीं करते हैं. बाईपास में भी ऐसे लोग होते हैं जो कि टाका लगाते समय बहुत अच्छे से केयरफुली टाका नहीं लगाते हैं, चेक नहीं करते हैं, या उनके पास स्किल ही नहीं है उतना कि भाई after MCH, after a year or two, if somebody is doing a bypass, obviously his bypass is going to be inferior than a surgeon who is doing it for 10-12 years. So the point is, कोई भी human intervention is not a perfect intervention. 100 में से 90 लोग आसानी से निकल जाएंगे, but जो 10% लोगों में अभी भी दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक बार bypass हो गए तो अब जिंदगी भर फ्री हो गए. Please get a repeat angiography done. In modern context, in today's context with COVID in picture, CT angiography करवाइए. CT angiography की images हमें भेजिए. We'll tell you more about it. Sir, I'm 19-year-old and I have sudden increase in my heartbeat, and for that I have done my color Doppler and found TR trace. So TR trace is not to worry, and sudden increase in heartbeat can be many other things. Particularly at 19 years of age, the disease that we are discussing today, chances that you have that disease, Mr. Aman Sharma, is not there. So don't worry on that front. So a sudden increase in heart rate के लिए आप हमें cardiac second opinion पे please पूरे अपनी investigation के साथ भेजिए. And उसके usually most often this is asymptomatic, और थोड़ा बहुत अगर हुए भी issues तो हम उसके लिए EP study आपको advise कर सकते हैं future में, और उसके लिए आप please हमें query अलग से भेजिए, इस topic से related नहीं है. Mr. Nitin Daman, sir, I have a problem. When I walk, I get pain in my left side of chest, and if I relax, I'm fine. I'm able to breathe in night very uneasy. So, Mr. Nitin, your age you have not mentioned. If your age is above 40, you should definitely get angiography done. While walking, if you get pain on the left side of chest, it has to be ruled out. It has to be seen. If you are younger, the chances that it is because of coronary artery disease is less, but still it's there. We have done bypass surgeries for 24-year-old people also. I've heard about stentings for 20 years kids also. So it's not that any age is totally free,
but chances are lesser that you will have any symptoms. If at all you are above 40, please get a CT angiography done and send us the report. We'll tell you more about it. Ms. Ritu Singh, doctor, is bypass surgery painful, and what CAB to be post symptoms after the bypass surgery? See, bypass surgery or any surgery for that matter, there will be some element of pain. Doctors try their best to decrease the pain or ease the pain. That's where bypass surgery के लिए जो reluctance है लोगों की वो रहती है. जो reluctance है that's natural. अगर कोई मुझे भी कहे bypass surgery कराओ, मैं भी 2 बार सोचूंगा. So it has to be weighed pros and cons. जब bypass surgery हुई, पहले 2-3 दिन तक जब तक आप ICU में हैं, usually pain को हम easily दबा देते हैं because we give very heavy medications for that. After 2-3 days, there will be some element of pain for at least 6 weeks, which has to be titrated with medicine, but medicines cannot be given very heavy, so थोड़ा बहुत दर्द रहता है. And उसके बाद में lifelong, because what we are doing in bypass surgery is essentially stealing one artery from your chest and putting it into the heart. When we steal an artery from your chest and put it into the heart, the chest wall will have some symptoms. थोड़े बहुत pain होना chest में, very common symptom after bypass surgery, but that is the chest wall, not the heart. Okay, so that is essential कि bypass surgery का compliance इसीलिए poor है because इस type के symptoms बने रहते हैं and patient doesn't get that satisfaction of being perfect. But then heart is happy and heart goes on to live longer, and that's where bypass surgery is superior, that the long-term results are excellent because your artery is being connected with your own artery. Okay, so pain is a small trade-off, and I think it's worth it. Muhammad Aziz is saying, good evening, sir. Maybe this situation a little different from the topic, sir. How may one can find that it is vulnerable, unstable or moving plaque or stable plaque? Why unstable plaque is more dangerous? So this is a very theoretical question you are saying, sir. So unstable plaque or stable plaque is all a pathological situation where this is about the cholesterol plaque. इस cholesterol plaque में अगर soft plaque है and उसका cap rupture होता है, तो जिस समय वो rupture होता है, it becomes unstable. It may stay stable for years before becoming unstable suddenly. During the period it is unstable, it's not moving, so moving का concept वहाँ नहीं होता है. It just कि वो जो plaque है अब अनस्टेबल हुआ है, या तो वो अनस्टेबल होके आपको मेजर हार्ट अटैक देगा या फिर से धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएगा. That's the way you should look at it. And it's not like plaque moves from one position to another, but when the plaque ruptures, it causes clot formation, and that clot formation blocks the flow distally. जो उसके नीचे की एरिया है वो पूरा वो डिस्ट्रॉय कर सकता है हार्ट का. So unstable angina and stable angina are clinical situations. Plaque being stable and unstable is pathological situations. Technical difference है, कभी अलग से आराम से इतना से बात करेंगे. This is not the thing for it. Sarab Kaurji saying, nowadays my chest feels congested followed by burning sensation around my chest. In fact, there is little pain around my chest muscles. Please help me out. So that is not to be worried, Sarab Kaurji. Women in general are blessed with this disease. And if you are as young as your picture is looking very briefly to me, if you are below 40, don't worry. Some pain around the chest muscles is not to be worried about. Okay, some burning sensation could be because of acidity, gas, many other reasons are there, and most often it is actually the muscle pull while you're working something, while you put some effort, muscle gets pulled, and then it continues to give you trouble for many weeks ahead. For a younger person below 40 years, to have this disease is not common, it is rather an abnormality. But still it happens, so nothing can be ruled out. And that's where the limitation of online consultation cannot really give you that. We are a second opinion platform where somebody has seen, diagnosed, and then you want to verify. For that, our platform is excellent, Second Opinion, cardiacsecondopinion.com. Any further questions, I'll be happy to take. So the take-home message for you all is, 1, in emergency, go to the nearest doctor. 2, if you are stable and somebody has told you that you have a severe heart disease requiring stent or bypass, definitely get a second opinion. On second opinion, there are many factors. If you fill in all the page and form properly that our site requires, we'll be able to give you a precise help, precise guideline how to go about it.
And may you live longer. May the heart disease something we all beat together. May we get a treatment which does not require stenting and bypass surgery in future, and only medicines may suffice. But today's scenario is there are three different modalities, three different type of people handling it, and the confusion is there. We try to remove that confusion, and trying our best on that. Have a great day and have a great weekend ahead. All the best.